prostitution, drug abuse, real-life murders, suicide, rape, casting couch and even terrorism. ऐसा कोई भी क्राइम का पहलू नहीं है जो बॉलीवुड के स्टार्स की लाइफ को रियल लाइफ में ना छूता हो। डॉन्स, माफिया, अंडरवर्ल्ड के साथ हमारे स्टार्स की ऑब्सेशन है लेजेंडरी। जहां लोग स्टार्स को वर्शिप करते हैं, वहीं हमारे स्टार्स अक्सर अंडरवर्ल्ड की पावर से खुद ही इम्प्रेस हो जाते हैं और गहरे रिश्ते बना लेते हैं। बॉलीवुड स्ट्रगलर्स क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। द लेटेस्ट सिमरन सूद विजय पलांडे क्राइम स्टोरी इज वन सच एग्जाम्पल। अभी तक की जो भी डिटेल सामने आई है, किसी फिल्म की ड्रामेटिक कहानी से कम नहीं है। ऐसा ही एक केस था मरिया सुसाइराज का, जिन्होंने एलिजिडली अपने फियांसे जेरेमी के साथ मिलकर अपने क्लैंडस्टाइन लवर के टुकड़े टुकड़े करके मर्डर में असिस्ट किया था। कई बार तो खुद फिल्म से जुड़े लोगों की लाइफ के हाथ से किसी फिल्म की इंटरेस्टिंग सीन से कम नहीं। एक्ट्रेस दिव्या भारती की अपनी बिल्डिंग से गिरकर मिस्टीरियस डेथ आज भी बनकर रह गई है एक मिस्ट्री। म्यूजिक टाइकून गुलशन कुमार पर हुआ फेटल अटैक भी एट्रीब्यूट किया जाता है बॉलीवुड के नामी म्यूजिक कंपोजर के नाम। ऋतिक रोशन के डैड राकेश रोशन पर भी किसी शूटर ने फायरिंग की थी फिल्मी अंदाज में। Although he survived, but the accident was unnerving. कुछ सालों पहले एक्टर कमल सदाना, जो थे कजोल के डेब्यूटेंट कोस्टा, के डैड ने एक पार्टी खत्म होने के बाद अपनी पूरी फैमिली को शूट कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। फॉर्चुनेटली कमल अपने डैड की गोली से सिर्फ घायल होकर रह गए। अब इस तरह के खतरनाक रियल लाइफ इंसिडेंट्स रियल लाइफ की स्टोरी के जैसे ही लगते हैं। ऐसा लगता है मानो क्रिमिनल वर्ल्ड और क्राइम फिल्म्स और फिल्मी दुनिया को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या सच में बॉलीवुड करता है क्राइम को एनकरेज? What role does media play in highlighting the crime and criminals? जानते हैं इसका जवाब on Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet. क्राइम और बॉलीवुड का बहुत ही पुराना नाता है और एक बार फिर न्यूज में छाया हुआ है। बिल्कुल, एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ नाता, आई थिंक इट्स एन ऑब्सेशन कि जितना ही क्रिमिनल्स को बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्शन होती है, उतना ही आई थिंक बॉलीवुड, इवन जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो खुद इतने एनामर्ड हो जाते हैं विद क्राइम एंड क्रिमिनल्स एंड कहीं पे there is some strange attraction, you know, that works between these two worlds, Bollywood and crime. What do you think is the reason for this obsession? It's quite intriguing, Supreet, because एक तरफ हम देखते हैं कि लोग इनको हीरो वर्शिप कर रहे हैं जो स्टार्स हैं, एंड वहाँ हम देखते हैं तो जो स्टार्स हैं दे आर टोटली ऑब्सेस्ड विद द अंडरवर्ल्ड। अब इट्स मच बेटर, बट अगर हम 10 साल पहले देखते तो इट वाज नेवर अ स्कैरी वर्ड टू यूज। द अंडरवर्ल्ड वाज लाइक अ स्टेटस सिंबल। तो जैसे आजकल हमारे स्टार्स अपनी गाड़ीज को शो ऑफ करते हैं, अपनी बॉडीज को शो ऑफ करते हैं, एक ज़माने में वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड के नेम्स को शो ऑफ करते थे, एंड बहुत proudly they used to actually drop names and show off their connections, and this is not something I've heard. I have seen this happen where अभी ये भाई आ रहे हैं ऑफिस में और अभी ये भाई घर आ रहे हैं, and मेरे से ये questions मत पूछना, भाई नाराज हो जाएंगे इंटरव्यू देख के, that kind of stuff. And whenever if you look at the underworld people, the powerful people from the underworld, इनकी जब private parties होती हैं, इनके घरों के functions होते हैं, तो हमारे बड़े से बड़े स्टार्स वहाँ जाके उनके लिए नाचे हैं, उनकी पार्टीज में जाके फ्री में डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहीं पे एक एडमिरेशन है तो वो जा रहे हैं। इट कुड बी मनी, इट कुड बी द पावर. दिस प्रॉब्ली एक्सप्लेन्स व्हाई दे ऑल्सो मेक मूवीज लाइक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड ऑल दैट, बिकॉज बॉलीवुड itself is fascinated by the power of the underworld and crime. Do you think that to some extent it's media? Yes, I think in Simran Sood's case, I do blame the media. हमें अपनी responsibility यहाँ पर share करनी पड़ेगी, and while we are shooting, I hope कि हमारे producers बार-बार सिमरन की बहुत सारी sexy and glamorous photos ना दिखाते रहें. She's in police custody right now for a very heinous crime or at least a charge. तो जब मीडिया उनके कोई भी स्टोरी रोज देता है, इतनी बड़ी फोटो सिमरन सूद की, और जो बेचारे मर गए उनकी तो फोटो शायद ही दिखी हो कि उनके पेरेंट्स को ऑब्ituary तक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, एंड हियर यू आर दैट द गाय हु इज द किलर हु इज बीन किलिंग देम, उसकी एक छोटी सी मगशॉट दिखा देंगे। गौतम वोरा हु इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय फ्रॉम अ वेरी अपस्केल मुंबई फैमिली, तो उनकी फोटोज आ रही हैं। सिमरन सूद हैज दो सेक्सी पिक्चर्स, तो उनकी फोटोज आ रही हैं। सो यस, मीडिया इज सेंसेशनलाइजिंग दिस बिकॉज दे हैव प्रिटी फेसेस, गुड लुकिंग faces to splash. Do you think in these glam heads this is just a shortcut to fame as well?
I'm quite shocked because अगर सिमरन की story आप follow कर रही हैं तो in one of the newspaper articles the cops have said कि सिमरन was saying कि मेरी real age 38 मत बताना, मेरा career खराब हो जाएगा. So look at her guts. She's still imagining and she is probably hoping that she can come out of jail and still maintain her career and probably take it further. Who do you blame for this, Supreet? I think it's people like Ram Gopal Verma who are glorifying people like Maria Susiraj जो बाहर आ चुकी हैं. I also blame the system for it because today, you know, it's like you're a pretty face, you're going to get away with it. So Maria Susiraj का भी यही था. उनके boyfriend की photos बहुत कम आई, उनके fiancé की photos बहुत कम आई. But Maria Susiraj was an attractive woman, तो उनकी photos रोज newspapers में, रोज media में splash होती थी. And कहीं पे जब एक बार-बार आप एक खूबसूरत चेहरा दिखा रहे हो, तो एक sympathy factor आ जाता है. Which is probably what will happen in Simran's case too, and I think I blame the media. I believe the whole legal system here. I mean, seriously, why does everybody in Bollywood get away? तो अगर आज मैं criminal mind हूँ, मैं खूबसूरत criminal mind हूँ, young हूँ, and you know I'm sexy, so I'm gonna think, you know what, there is not even one star who went to jail for any kind of crime, whether it's Sanjay Dutt, whether it's Salman Khan, whether it's anybody. I mean, they have all come out. Nobody has stayed behind bars. And also, how many stars do we have who do not have a criminal charge against them, whether it's Saif, whether it's Salman, whether it's Sanjay Dutt, anybody. I mean, you know, they get into fights, they do everything. So the whole message being sent out in India is that, you know what, if you're part of Bollywood, if you're a good-looking face, you are going to get away with it. And unfortunately, most of them do. It's unfair to compare our stars here to, you know, these kind of criminals because none of our stars have indulged in such dirty stuff like going and murdering people. Yeah. But then, you know, we are very glamour struck. We are star-struck as, you know, people, and hota hai. I think that sympathy factor does work with good-looking people, and if they're famous, yes, it's even worse. Well, Simi, that's not the only distraction or obsession of certain kind. There's also other crimes that are around. Absolutely. I mean, it's not just, you know, there's nothing, no kind of crime that Bollywood hasn't experienced in real life, whether it's terrorism, whether it's extortion, whether it's murders, whether it's rapes, you know, suicides. We have just about every kind of crime that has happened in Bollywood in real, not just, I mean, like they say कि हमने screen पे नहीं देखा है, ये real life में होता है. And it's probably, you know, their indulgence with drugs and casting couch, which probably then develops into prostitution, and you know there's a lot of pressure on these people. They don't have the money, they want to make it, they want to make it, they want to survive, and they don't want to give up, so they start compromising on their morals. तो drugs से कई बार शुरू करते हैं, फिर casting couch होता है, producers, directors, they are forcing these girls to sleep with them. After some time, I think वो ढीठ हो जाती होंगी. It probably doesn't matter to them, and that probably leads to prostitution, which is the next bad and sad step, but that's the way it works. So we have everything here. We have drug abuse, we have substance abuse, alcoholism, you know, prostitution, and it just one thing leads to another. और एक लड़की जो ये कर चुकी है, she has almost become like a glorified prostitute. Chances are if she never makes it, she's going to become an agent, and when she's too old to be selling herself, you know, whether it's for movies or whether it's for prostitution, she's going to encourage other girls to do this. And we have cases that exist in Mumbai like that, in Bollywood, जहाँ कोई supply करते हैं और कोई खुद को supply करवाते हैं. So then I guess we could say that competition is leading the girls there. No, I don't think there's any question of competition here because this desperation, they haven't made it and they are strugglers and they're getting into all this. So more than competition, I think it's desperation.